Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Knowledge check, page number 150. Question number A. State whether the following statements are true or false. Correct the false statements. Number 1. Force can be applied on an object only by touching the object. Answer is false. Force can be applied on an object even without touching the object. Number 2. Frictional force is a contact force. Answer is true. Number 3. Charges are of two types, positive and negative. Answer is true. Number 4. The poles of a bar magnet always attract each other. Answer is false. Like poles of a magnet repel each other and unlike poles attract each other. Number 5. Force of friction always acts in the direction of motion. False. Frictional force always opposes the motion. B. Fill in the blanks using the words given in the bracket. Electrostatic, pull, repel, gravitational, muscular, push. Number 1. The dash and dash on an object is defined as force. Answer is push, pull. Number 2. Earth revolves around the sun due to dash force, gravitational. Number 3. The force exerted by one charged body on another charged or uncharged body is called dash force, electrostatic. Number 4. The like poles of a bar magnet dash each other, repel. Number 5. Dash force is a contact force. Answer is muscular. Exercises. Question number A. Choose the correct option. Number 1. By applying a force, one can, option A, change the direction of motion of the object. B. Increase or decrease the speed of the object. C. Start or stop the motion of the object. D. All of these. Answer is D. All of these. Number 2. Which of the following is a contact force? Option A. Muscular force. B. Electrostatic force. C. Gravitation. D. Magnetic force. Answer is A. Muscular force. Number 3. Which of the following are true? Option number 1. Friction always opposes motion. Number 2. Friction is due to the two surfaces in contact. Number 3. Friction is always equal to applied force. Option A 1 and 2. Option B 2 and 3. Option C 1 and 3. Option D 1, 2 and 3. Answer is A 1 and 2. Number 4. Electrostatic force is option A always attractive, B always repulsive, C both attractive and repulsive, D none of these. Answer is C both attractive and repulsive. Number 5. Friction can be decreased by number 1. Lubricating the surface. Number 2. Smoothing and polishing the surface in contact. Number 3. Increasing the weight of the object. Option A 1 and 2. Option B 2 and 3. Option C 1 and 3. Option D 1, 2 and 3. Answer is A 1 and 2. Question B. State whether the following statements are true or false. Correct the false statements. Number 1. Muscular force is a non-contact force.
Answer is false. Muscular force is a contact force. Number 2. Friction always opposes the motion of the object. Answer is true. Number 3. Friction causes wear and tear of machine parts. Answer is true. Number 4. If an object is in motion, then a force must act on it continuously. Answer is true. Number 5. The streamlining of object is done to reduce friction due to air resistance. Answer is true. C. Fill in the blanks using the words given in the box. Rolling, friction, contact, attractive, gravitational force, repulsive. Number 1. Frictional force is dash force. Answer is contact. Number 2. An object dropped from a height come down due to dash force. Answer is gravitational force. Number 3. Electrostatic force is both dash and dash. Answer is contact, attractive. Number 4. Dash friction is less than sliding friction. Answer is rolling. Number 5. By applying grease to machine parts, one can reduce dash. Answer is friction. Question number D. Answer the following questions in one word or a sentence. Number 1. When a football player kicks a ball, what type of force is applied? Contact or non-contact? Answer is contact. Number 2. Give one example of a non-contact force. Answer is gravitational force. Number 3. Which is greater, sliding or rolling friction? Answer is sliding. Number 4. Give one example where friction is necessary. Answer is we are able to walk. Number 5. What is meant by drag force? Answer is the resistance offered by the fluid against the motion of an object is known as drag force. Question number E. Answer the following questions in brief. Question 1. What are the 4 effects of forces? Forces के 4 effect लिखिए. The 4 effects of forces are: Number A. Move an object from its state of rest or increase the speed of a moving object. B. Decrease the speed of a moving object or stop a moving object. C. Change the direction of a moving object. D. Change the shape of an object. 4 इफेक्ट्स इस प्रकार के हैं फोर्स के. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको मूव करता है, ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज़ करता है, बी स्पीड को डिक्रीज़ करता है और ऑब्जेक्ट का मोशन को स्टॉप करता है, सी डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की चेंज करता है, डी शेप है वो ऑब्जेक्ट का चेंज करता है. नंबर 2. लिस्ट आउट 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के कोई भी 2 एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बतलाइए. आंसर इज 2 एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन आर: ए, इफ़ वी आर एबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड, होल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड फिक्स अ नेल ऑन द वॉल, these are all because of friction. If there were no friction, we would slip on the floor while walking, would not be able to hold a pencil or fix a nail on the wall. All machines having gears, pulleys and rollers require friction to work. Without friction, one part of the machine will not be able to move over another part of the machine. फ्रिक्शन के एडवांटेजेस हैं कि हम ग्राउंड पे चल रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट्स को होल्ड कर पा रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से नेल फिक्स करते हैं वॉल पे फ्रिक्शन की वजह से. अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो हम ग्राउंड पे फ्लोर पे चल नहीं सकते, स्लिप हो जाएंगे, पेंसिल को भी पकड़ नहीं सकेंगे और नेल भी हम वॉल में फिक्स नहीं कर सकेंगे.
सारी मशीन्स में गियर्स, पुलिस और रोलर्स होते हैं। ये सारे फ्रिक्शन पे ही वर्क करते हैं। बिना फ्रिक्शन पे कोई भी मशीन का पार्ट दूसरी मशीन के पार्ट के ऊपर वर्क नहीं कर सकेगा। 2 disadvantages of friction are: A. All machines have friction. Due to this friction, the machine parts heat up and lose energy. This brings down the efficiency of the machine. B. Friction also brings about wear and tear in the machine parts. They have to be constantly replaced to make them run smoothly. दो डिसएडवांटेजेस फ्रिक्शन के इस प्रकार हैं। ए, सारी मशीन्स को चलने के लिए फ्रिक्शन चाहिए होता है, पर ये फ्रिक्शन की वजह से मशीन पार्ट्स हीटअप हो जाते हैं और एनर्जी लूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एफिशिएंसी जो मशीन की है वो कम हो जाती है। बी, फ्रिक्शन वियर एंड टियर भी लाता है मशीन पार्ट्स में, यानी मशीन पार्ट्स फ्रिक्शन वजह से घिसते भी हैं और उनको कॉन्स्टेंटली रिप्लेस करना चाहिए ताकि वो स्मूथली रन कर सके। क्वेश्चन नंबर F, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। नंबर 1, गिव रीजन एज टू व्हाई फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन नेसेसरी इविल क्यों है, इसका कारण बताइए। आंसर, फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ऑल मशीन्स हैविंग गियर्स, पुलीज एंड रोलर्स रिक्वायर फ्रिक्शन टू वर्क. Without friction, one part of machine will not be able to move over another part of machine. Brakes in all vehicles works on friction, but due to this reason, the machine parts heat up and lose energy. This brings down the efficiency of the machine. Friction also brings about wear and tear in the machine parts. They have to constantly replace to make them run smoothly. फ्रिक्शन मॉडर्न ज़माने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सारी मशीन्स जो है फ्रिक्शन के ऊपर चलती हैं। जैसे मशीन्स जैसे गियर्स, पुलीस एंड रोलर्स को फ्रिक्शन चाहिए होता है चलने के लिए। बिना फ्रिक्शन के एक पार्ट का मशीन दूसरे पार्ट के ऊपर नहीं चल सकता है। ब्रेक्स जो होती हैं व्हीकल्स में सारी फ्रिक्शन के ऊपर वर्क करती हैं और इस फ्रिक्शन की वजह से मशीन पार्ट्स हीटअप हो जाते हैं और एनर्जी लूज़ करते हैं और इसकी वजह से जो मशीन है एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर सकती है। मशीन पार्ट्स में वियर एंड टियर होते हैं और इनको कॉन्स्टेंटली मूव करने के लिए, रन करने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए हमें रिप्लेस करना चाहिए। टायर्स ऑफ व्हीकल्स हैव grooves to provide better grip on the road. However, they get worn out due to friction. Tires have to be replaced if they get worn out. Thus, friction has both advantages and disadvantages. That is why friction is called a necessary evil. टायर्स जो व्हीकल्स के होते हैं उनमें ग्रूव्स होते हैं जो ग्रिप प्रोवाइड करते हैं रोड के ऊपर और वर्न आउट हो जाते हैं टायर्स फ्रिक्शन की वजह से। टायर्स को रिप्लेस किया जाता है जब भी वो वर्न आउट हो जाते हैं, मीन्स ख़राब हो जाते हैं। फ्रिक्शन के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसीलिए फ्रिक्शन को नेसेसरी एविल कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू वी लुब्रिकेट मशीन पार्ट्स? व्हाट वुड हैपन इफ़ वी डू नॉट डू सो? हम मशीन पार्ट्स को लुब्रिकेट क्यों करते हैं? अगर हम ना करें तो क्या होगा? आंसर, वी लुब्रिकेट machine parts to reduce friction. We apply lubricants such as oil or grease between the moving parts of a machinery. If we do not lubricate, the machine parts heat up and lose energy due to friction generated between the machine parts. This reduces the efficiency of the machines. Friction also brings about wear and tear in the machine parts. They have to be constantly replaced to make them run smoothly. हम मशीन पार्ट्स को लुब्रिकेट करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। हम लुब्रिकेंट सप्लाई करते हैं ऑयल, ग्रीस, मूविंग पार्ट्स जो होते हैं मशीनरी के उसमें। अगर हम लुब्रिकेट नहीं करेंगे तो मशीन पार्ट्स हीटअप हो जाएंगे और एनर्जी लूज़ करेंगे
और ये क्या करता है, जब एनर्जी लूज़ करेगा और इसकी जो एफिशिएंसी है जो मशीन की वो कम हो जाती है और वियर एंड टियर करते हैं मशीनरी पार्ट्स को। इसीलिए हमको कॉन्स्टेंटली रिप्लेस करते रहना चाहिए मशीनरी पार्ट्स को स्मूथली रन करने के लिए मशीन्स को। Question number H. Picture talk. Identify the type of friction shown in this picture. First picture answer is sliding friction. Second picture is of rolling friction.